Hi students, welcome back to my channel Pioneer Coaching Center of English. I am going to continue my lecture on common errors. Now look at the first question. More persons than one has been involved in this quarrel. Remember, when we have word plus preposition plus word, word plus preposition plus word, when the first word is a noun or a pronoun, this is the subject. When the first word is a determiner, the second one is the subject. जब भी word plus preposition plus word का स्ट्रक्चर आपके सामने आए एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो गौर से देखिए पहला वर्ड क्या है. यदि पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन है तो वही सब्जेक्ट है, क्रिया का एग्रीमेंट उसके अनुसार. यदि पहला वर्ड डिटरमाइनर है तो सब्जेक्ट सेकंड वर्ड होगा, प्रीपोजिशन के बाद वाला क्रिया का एग्रीमेंट उसके अनुसार. हियर द फर्स्ट वर्ड पर्सन्स इज ए नाउन, so this is the subject. Hence the error lies in part B. It must be replaced by have. More persons than one have been involved in this quarrel. यदि ये पर्सन्स सिंगुलर नंबर में आकर वन के बाद हो जाता तो फिर आपका हैज बिल्कुल सही हो जाता. मोर देन वन पर्सन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल. यानी आप दो तरह से इसका करेक्शन कर सकते हैं. एक तो पार्ट ए में पर्सन्स को सिंगुलर करके वन के बाद लगा देंगे तो आपका सही सेंटेंस हो जाएगा मोर देन वन पर्सन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल. दूसरा, यदि आप पर्सन्स को शिफ्ट नहीं करते तो फिर हैज को पार्ट बी में हैव करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका पर्सन्स हो रहा है. Now come to question number 2. I met the two girls. यहां द बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि द टू गर्ल्स डिफाइंड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन whom, the adjective clause whom I believe. I met the two girls whom I believe are twin sisters. Now see, are twin sisters in part C ये डिस्क्राइब कर रहा है टू गर्ल्स को. अतः रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव ना होकर नॉमिनेटिव होना चाहिए था. सो द एरर लाइज इन पार्ट बी. वी मस्ट रिप्लेस whom by who. थोड़ा सा रुकेंगे. आई मेट द टू गर्ल्स who I believe are twin sisters, क्योंकि who का जो प्रेडिकेट है वो आर ट्विन सिस्टर्स है, अतः ये नॉमिनेटिव होना चाहिए. आई बिलीव हैज बीन, दिस पार्ट आई बिलीव हैज बीन इंसर्टेड, सो इट मस्ट बी सेपरेटेड बाय वन कॉमा ऑन ईच साइड. हेंस द करेक्ट सेंटेंस इज आई मेट द टू गर्ल्स हु आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स. स्टूडेंट्स, आप में से जो भी मेरे चैनल पर आज नए हैं वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करें, लाइक करें, कमेंट करें. Now come to question number 3. He entered into his new house last Sunday. Remember, the verb enter is transitive when it shows a real entry. वो प्रवेश किया अपने नए घर में, द एंट्री इज रियल. जब वर्ब एंटर रियल एंट्री दिखाए तो वो प्रीपोजिशन नहीं लेता. यदि ये इमेजिनरी एंट्री दिखाता हो तो प्रीपोजिशन इनटू लेता है. जैसे आप कहना चाहते हो आई एंटर्ड इनटू हिज माइंड. माइंड में कोई प्रवेश नहीं कर सकता. द एंट्री इज इमेजिनरी, So it must take into I entered into an agreement with him. यहां भी आपकी एंट्री इमेजिनरी है.
बट यहाँ इस सेंटेंस में एंट्री इज रियल, हेंस इन पार्ट बी into is not required. The correct sentence is he entered his new house last Sunday. Now come to question number 4. Even many people carry an infection without showing its symptom. पार्ट ए में सब्जेक्ट मेनी पीपल पर स्ट्रेस दिया गया है. इस स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं, ऐसा प्राय होता ही है. So the error lies in part A. We must remove the word even. Hence the correct sentence is many people carry an infection without showing its symptom. Question number 5. They will be coming to attend the farewell party. Isn't it? As per the rules of the question tag, the verb to the question tag is always in agreement to the verb in the main statement. The same thing happens to the subject of the question tag also. So the error lies in part C. Question tag का subject और question tag का verb हमेशा मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में होता है. So the question tag isn't it must be replaced by won't they be. Isn't it की जगह सही क्वेश्चन टैग won't they be होगा. Hence the correct sentence will be they will be coming to the farewell party. Won't they be. Question number 6. If I was you, remember the sentence shows improbability or unfulfilled desire. In such a sentence, the verb to be were is the correct one. So the error lies in part A. We must replace the verb to be was by were. Hence the correct sentence, students, is if I were you, I would not attend the function. Now come to question number 7. He did nothing else than play. Remember, when the antecedent is negative, nothing, no one, etc., the following preposition is always but. It cannot be than. So the error lies in part C, and the correction will be but. That is, we must remove then and use but as the preposition. Other का प्रयोग यदि होता no other thing, तो फिर then हमारा correct होता. Since it is nothing, negative without the distributive adjective other, the correction is but, and thus the correct sentence is he did nothing else but play. Now come to question number 8. It is high time he stood on his own two legs. It is high time के बाद यदि क्लॉज हो तो उसकी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट यानी मेन वर्ब टू होती है. सो स्टूड इज करेक्ट. It is high time he stood on his own two legs. हर इंसान को दो ही पैर होते हैं. So here in part C, the number 2 is not required. So remove it. The error lies in part C. The correct sentence is it is high time he stood on his own legs. Number 9, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. The subject to the sentence is knowledge. In part A, third person singular. But its verb in part C is are, which is plural. It must be each in place of are. So students, the error lies in part C. We must change
the verb are to each. The correct sentence is thus, knowledge of at least 2 languages is required to pass the examination. Number 10. When I arrived, I found them both sitting at the table. Yes. When the sense is that of nearness, the preposition at is used. So part A and part B are correct. Waiting on me, wait on और wait upon का मतलब होता है to attend, सेवा करना. But here ये persons इनका इंतजार करते हुए पाए गए. That is the purpose. So the preposition on is wrong here. The error lies in part C. The preposition on must be changed to for. Hence the correct sentence is, when I arrived, I found them both sitting at the table waiting for me. Question number 11. Please stop. This question is for my students. You have to solve this question, find out the error, and answer in the comment box. आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना कमेंट देंगे, शेयर करेंगे, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत करें, बेल आइकन को टच करें, ऑल को क्लिक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.